when you come down to this, आप functions पे जाओ. And today we will look at the scalar value, the table valued function. So table valued function says that you give an input and get a dynamic table as an output. Is this clear? Right. तो मैंने इसको modify किया. So now this is your first case. इसको तुम कोड को कॉपी कर लो तुम लोग अपने पास से, right? So I have the function name and this is my input parameter. This is a simple case, right? Simple inline function. ये input parameter and it returns what? A table. And then I say select star from item sales order where party as a name, ये input parameter. This is a simple table function. Correct. Now these functions can be used extensively for example in the Excel project. I've got data ready in a data warehouse. I make a table function and then bring the output in Excel in pivot friendly format. Is it clear? तो ये जो हैं ये दो फंक्शंस जो हैं टेबल वैल्यूड फंक्शन जो है तुम लोग कर लेना. देन मल्टी स्टेटमेंट फंक्शंस जो हैं अगर तुम्हें इसमें कि मतलब व्हेन आई मेक इट देन I can have multiple statements into it. तो इसमें क्या हुआ कि मैंने एक table variable. So here what I do is I declare a function here. इसमें begin and end होता है multi statement function, right? So I say here create a function. Then this is a function name. ये practice कर लो. Then this is the input. ठीक है बेटा? Now this returns an item table. So now this is a table variable. So as a variable is there, I can also return a table variable, which is a table, and that table variable then you specify the columns. Correct. And then you can this is a insert into this and then return and then end. So it has a return. So it returns this. So it returns at item which is a table variable. It ends with a return and then there is a begin and an end. Is it clear? So basically these functions will be used where there is a dynamic querying. Clear? ठीक है ना? So that's what this thing is. ना थर्ड वाला जो है तुम्हें बेटा इसका एक तीसरा सैंपल जो है मैं तुमको बता रहा हूँ. मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूँ. ये इसका एक वेरिएशन बना. Then let me just see modify. Then table valued functions. This is again a variation. तुम इसका प्रैक्टिस कर लेना. So this is an inline function and then there is a multi-statement function. So inline function, this sample is here. It does not have a begin and end. It just returns a table, then it returns this, and a multi-statement function goes like this. It has a begin and an end, and you can declare a table variable, and you have an input. This is good enough to clear your basic function interview. Now scalar valued function I have taught you. Procedures, begin and end I have taught you. Now the other things which I am going to tell you now are going to be indexes. Is it clear? So I will be talking about the index questions which will come. उसको एक बार ढंग से देख लो.
सो इंडेक्सेस प्राइमरीली आर टू टाइप्स जो कि तुमसे पूछते हैं. वो होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स which depend upon the physical positioning of the columns. ठीक है. एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो कि आपकी जो होती है दिस थिंग, वन कॉलम कैन हैव ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स which is primarily going to be linked with the composite key. Is it clear? Non-clustered index can be many, I think up to 999 or 499, one of the numbers. आज तक तो मैंने 999 indexes नहीं किए, right? But 999 indexes, and this are gone on to any column by which one does group by or where clause. Non-clustered indexes are not dependent upon physical positioning, but they are dependent upon the logical storage. Clear? Everybody clear? Any questions? तो पूछ लो, chat में पूछ लो. क्योंकि ये बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एट द क्लाइंट एंड इफ आई हैव टू गो देयर, इफ आई प्लेस यू थ्रू माय प्रोडक्ट and at the client end the person does not know what's an index and what is not clustered, it becomes a bit embarrassing. Then types of tables. तो one is a normal table जो कि आप select star into से करते हो या insert into से करते हो. One is a local temporary table which lasts for the given session only. ये पक्का पूछते हैं. And then there is a global temporary table which lasts across the session. Is this clear? बेटा हाँ के ना? Any questions? Then types of keys, वो पक्का पूछेंगे types of keys कौन कौन से हैं. ठीक है ना. अब टाइप्स ऑफ कीज क्या होता है? एक तो कॉम्पोजिट की. से फॉर एग्जाम्पल अ रो इज आइडेंटिफाइड बाय कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो इन तीनों को मिलाकर के ये बन गई कॉलम C1 प्लस C2 प्लस C3 इज अ कॉम्पोजिट की. मैं बेसिक बता रहा हूं. This becomes a primary key. So the primary key is going to be like this. Then there is a surrogate key which is generated based on the composite key. Clear? Everyone clear? Which is normally defined by the usage of the identity column. Clear है बच्चों की नहीं है? भाई each time I will not call this keys, I will call the surrogate key and then based on the surrogate key I'll generate based on the composite key I'll generate a surrogate key and then call that. ये clear है कि नहीं है? Guys, you have to do this portion very clearly, क्योंकि नहीं तो नहीं समझ में आएगा. I will not do it 3 times with a guy. You have to finish it. फटाफट 2-2, 3-3 बार इसको खत्म करो. क्योंकि अभी मेरा भी इंसेंटिव खत्म हो गया है. If I am not seeing any movement here, this is actually is going blank. My incentive is also gone, right? Clear है बच्चों के नहीं है? तो मैं फटाफट कंप्लीट करा के, बिकॉज वी विल सेंड द प्रोफाइल्स. हम तो प्रोफाइल भेज देंगे. जो हमारे पास कंपनीज आ रही हैं कि वी नीड 3 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स, आई विल सेंड द प्रोफाइल, बट यू हैव टू क्लियर द इंटरव्यू. तो ये प्रोसीजर जो है 2-2, 3-3 बार इसके तो पक्का ही कर लो, क्योंकि ये मैं फ्री में ऑफर कर रहा हूं ना.
ये stored procedures अगर this is more than enough for your interview. This product was deployed at more than 30 places. It was a very successful product. Just that हमने बाद में decide किया कि boss we needed customizations to be incorporated. कि जो Tally में TDL की customizations होती हैं, प्लस हमें JSON API से more secure way में cloud पे ले जाना था, प्लस हम लोगों को Tally के functions को we needed you use the Tally functions more. That's why we went to JSON. Otherwise, this product is also perfectly good. Is it clear? Yes or no? तो इस पे तो तुम अगर मास्टरी कर लो तुम्हारा सीक्वल में फेल नहीं होगा. You will not fail in SQL. बाकी Excel and other things can be a bit dicey. Even Power BI now is not a problem because you can use ChatGPT to clear the interview. वो मैं अपने प्रोडक्ट से बता दूंगा तुम्हें. Is this clear? And जब तक क्लोज नहीं होता then I might go intensively फटाफट वो सेशंस करते जाओ. Because once the projects, because अभी now there are many projects, there is an audit going on or the client is slow, वो जो भी है, तो then I have a little bit of time, I'll train you and then you go out in the field. Is it clear? Yes or no? Yes sir. एक होता है बेटा प्राइमरी की, कॉम्पोजिट की एंड सरोगेट की. फिर एक आता है यूनिक की. सो यूनिक सर ये सरोगेट की का यूज क्या होता है? हाँ, सरोगेट की बेटा क्या हुआ कि सरोगेट की ये क्या हुआ कि सपोज आई हैव गॉट 3 कॉलम्स व्हिच आर डिफाइनिंग अ कॉलम यूनिकली, पर मैं हर बारी C1 C2 C3 आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई, सो आई विल मेक एन आइडेंटिटी कॉलम which is coming by the combination of C1 C2 C3. So then I'll reference that identity column and then do it. Okay sir. Now a unique key can have null values. ये एक बहुत ध्यान रखना, वो पूछते हैं प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है, तो यूनिक की कैन हैव नल वैल्यूज. ऑल्दो इन माय केस आई विल नॉट अलाउ इट बिकॉज उसमें मेरा जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है कैन नॉट बी फाउंड. एनीथिंग विद अ यूनिक nullable value you cannot make a non-clustered index. Is this clear? Yes or no? Yes sir. So I have told you a little bit about indexes, I have told you about the types of the keys, and I have told you about the types of the tables, and we have handled the multi-statement table functions today. सर हाँ बेटा बोलो. बेटा थोड़ा सा ना आप लोग if you do it, नहीं तो क्या है कि whatever I am telling will go right over the head. If you finish this ना then I can stretch it a bit more. अभी मेरा भी my incentive is limited now. my question is what is the difference between composite key and surrogate key? Because हाँ मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ. कॉम्पोजिट की बेटा क्या होता है, say I pick up select star from item underscore sales underscore order. So if you see it here, this is a identity column, this is surrogate key. So this is an identity column, this is a surrogate key. Now in your primary you define what are your primary columns. Now we remove the primary columns because in Tally you could enter anything. The primary column we were not able to define it, but ideally we should define what are the primary key columns. Is this clear? So now in this case what happens is
Now, how do I uniquely identify this row? So this is the surrogate key here. This is the identity column. So now if I say with CT1 as select or row underscore number over order by order underscore number comma party ledger name party underscore ledger underscore name comma then item underscore supplier underscore order underscore ID। तो कोई भी जो फॉरेन कीज हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं उसके हिसाब से कर दो, इसको हटा दो अभी। देन dim underscore item underscore ID, then dim underscore date underscore ID, then dim underscore warehouse underscore ID, then company name as row underscore num1 comma star from item underscore sales underscore order। यहां तक पहुंच गए। select star from CT1 अगर मैंने इसको किया, now let's see what happens। company name क्या हुआ बाबा? Now if you see here, row underscore num1 is coming out 1 2 3 4 5 6 7 8। So what I do is I do a partition by, okay, I want to identify uniquely the row, right? So I pick this up, now you see row number 1 is coming 1 1 1 here. Is this clear? So for this particular table, this is the sort of a composite key. Now where row underscore num1 is greater than 1, तो ये क्या हुआ कि कुछ भी नहीं आ रहा। That means this set of columns identifies item sales order, which is actually this thing uniquely. So I know it from this, from item supplier order ID I've picked it up. Now let me try and remove the order one also, order number. Let's see whether this without the order number it works. So these are the foreign keys and the company name. Let's see whether it works. I get only one or multiple. So in this particular case, all the foreign keys which are into the fact table along with the company name, they form my composite key. अब समझ में आया? Yes or no? So here I have told you how to do a partition by and how to do an order by. Clear है कि नहीं है? clear तुम लोग बेटा ये खत्म करो, क्योंकि मुझे रैंक एंड डेंस रैंक आई नीड टू टेल यू, बिकॉज दैट रैंक एंड डेंस रैंक एंड रो नंबर, इस पे काफी सवाल आते हैं। इज दिस क्लियर? चलो लेट्स क्लोज इट, बिकॉज गाइस थोड़ा सा फिनिश करो तो फिर मैं आगे तेजी से बढ़ूँ ना। देवज्योति मैं आपके साथ आता हूँ कुछ देर में, अब्दुल मैं भी आपके साथ वो करता हूँ, भी कुछ करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। यस